Okay, so as I can see, everybody can hear me. Only thing, Mahima, please respond in the chat box. Right, present, and yes, sir, if you can hear me. Can you see the screen? All right, people. Before I take up the next thing, there was one question in the previous class which I asked you guys to park it for the next class. Okay. Today is the last session of this week. Like, I mean, this is the third class, consecutive class in this week. So we'll have the next class only in the next week. Now, if you can see this particular question, we had got the answer for this one. Okay. And the approach is pretty well, and the answer on the right hand side it is coming 0. Okay. Now, please understand that in questions of this kind, if the power is till 3, this approach which I have discussed is easy, is applicable. You know, what is that? Here I actually found z square as 4z minus 13. See, I wrote z square as 4z minus 13, and everywhere I tried to replace z square as 4z minus 13. Then on simplification, I actually arrived at the result. There could be a problem when the power is higher. Like in the question which we took in the last class, here the power is higher. Same approach can be applied. Here also you can try putting the value of z square as this particular thing, but eventually you will realize that it gets very complicated. I mean, बहुत ज़्यादा calculation हो जाता है. Going ahead with this is time consuming. So we can think of a better way of solving questions of this kind. You know, yesterday I was going ahead with this, but then I said don't continue with this. So in your notes, put a cross in this approach. Don't do this way. You know, in this particular question, leave it till here. This much is correct. This is also correct, but this is lengthier. We will understand a better way of solving this after this point. Allow me to erase all this. Okay. Now, please understand, like the next page, entire next page I can delete. That's not an issue. This page also I can delete. Now, you see that here they will ask you such a big thing. What we can do, that from the given result, this entire thing is 0. I can use an approach, and that approach I am calling as insert and adjust. What do you want to insert? I want to insert this thing in this particular thing. You won't find this way of explaining in the book. Understand it in the layman fashion as I am telling. Insert and adjust, मतलब ये वाला आपको यहाँ insert करना है और फिर values को adjust करना है. ठीक है? So in the next page, I am copying this question completely because I need to refer to that result. And somebody can tell me, what is this? Z square plus 10z plus 34, right? So we have already proved, found out z square plus 10z plus 34 equal to 0. Right? Now, let us see how I can go ahead with this. You want to find the value of this, then you can see that they are writing z power of 4. Now I want to insert this and adjust here. So what I'll do, I will keep z square, and जो remaining z square है ना, उसको मैं पूरा वैल्यू ये वाला लिख दूंगा. ध्यान से देखना, z square plus 10z plus 34. Now when you have done this, understand that this part is 0. But what are the extra things you have written? You need to adjust that. What do you mean by this, sir? You can see that z power 4 is there in my question. All right. Now here it comes z square into 10z, 10z cube. Please understand. Here it is
10z cube, but these people are asking you only 9z cube. So what I'll do, I will adjust that 1z cube. Please understand. Next, here you will get 34z square extra, but here you just need 26z square. So how much do you want to adjust? 8z square. I hope you understand. Now this part you have already adjusted. So if you actually open this one, you will see that we have taken care of this one and this one. This particular part minus 14z I am copying and plus 8 also I am copying. Right, okay, if you have understood so far. Right, okay, if you have understood so far. Everybody. Now, allow me to copy this particular thing. Again, you see that this fellow is z cube. So again, what I do, I keep one z, and that remaining z square of this z cube, I can again insert this entire result. What is that? Z square plus 10z plus 34. Please understand. Now I need to compensate. You can see that z into z square is z cube minus z cube. It is available. Next comes z into 10z square. It will become minus 10z square. But I need minus 8z square. So I will compensate that one with 2z square. Agree? Then you can see that z into 34z is minus 34z, right? But you only need minus 14z. So you will compensate that one by adding 20z. And this 8 can be easily copied. Insert and compensate. Insert and compensate. People, I am not writing this part, but this part is 0 because z square plus 10z plus 34 is 0. So this part is 0. Also, this part I am not writing. It is also 0. So I am left with this much. I can finish off here itself. I can just write this z square. Now you can put this z square as 10z minus 34. Here it is 2z square. So write 2 times of z square का value क्या हो जाएगा? 10z minus 34 और ये वाला 20z common कर लो plus 8. I think this is minus 20z minus 68 plus 20z plus 8. ये वाला portion कट जाएगा. Minus 68 plus 8 is minus 60. And this is my answer. Write F-I-N-E, fine, if you have understood and copied. Wonderful. I would give you one question on the same line for you to practice by insert and compensate approach. Okay, insert and compensate. This question will be of very high marks. I mean, they may give you a 5 marks. So this is considered to be an important question. Go ahead, try this one by that insert and compensate, a very similar of its kind, giving you
3 minutes for this. Please solve very diligently. The time starts now. Rahul, have you listened to the recording of yesterday's class? Okay, that's fine. Go ahead. Do this one. If you have finished doing this, you can write done. Yeah, no problem, Rahul. We can. Hope Kritika has started the recording. Oh, thank you so much. I missed on the date again. Let me press the date now. From here, I can get the date. So, is it Astha? Okay. Giving you 1 minute more. Hope you are solving this. Astha, the part which you have missed, it will be available in the recording. You can listen to it later on. Okay. Please copy this question and try this. Okay, your time is up. Anybody finished? If not finished, write not finished. Write fast. Not done, not finished. Okay, that's not an issue. Now, please do with me. Don't continue solving. Listen to me and help me out. Now, see, Z is given. You have to prove this and hence deduce. Means this result needs to be used to prove this. Again, power is 3. This insert and adjust. What is that approach I have discussed today? Insert and adjust. That may not be necessary, but let us practice this insert and adjust thing. So what I'll do, I'll keep the imaginary part on the right and I'll square it because I need Z square. So when I square it, I get, stop me if I am making any mistake. People who will catch my mistake can keep account of the dairy milk. Rahul already has a reserve of 4 dairy milk, right? Or 5. All right. So this is what is required and I have proved. So you can write hence proved. But out of 5 marks, the teacher will give you only 3 because you have not proved this one. So we have to prove this one. Now please understand this one once more. I'm changing the color of my pen to prove this. See here, 3
z cube है, तो leave z as it is and z square portion you can leave, make separately. Minus 13z square plus 9z plus 65 you have to prove equal to 0. That's fine. So what you can do, you can write this 3z instead of this z square. Write this entire thing. Z square minus 6z plus 13. Then think what are the things you have written. So you have written 3z cube, it is available. Then you have written 6 3 is 18, मतलब minus 18z square. ध्यान से देखो. But here you wanted only minus 13. So you have to compensate that with 5z square, correct? तब ना minus 18 plus 5 will be minus 13. Next 3 into 13, 39z. You have written 39z, but this fellow wants only 9z. So this has to be compensated by subtracting 30z. 39 minus 30 is 9z. And you can copy this 65 as it is. Agree? How interesting, and we have made our life very simple because this particular portion is 0. अगर ये 0 है, then this is 3z into 0. I am not going to waste my effort in again converting this one. I can do that. But what I'll do, I will simply write z square as 6z minus 13. Agree? So I'll write 5 into 6z minus 13 minus 30z plus 65. This part is 0. This is 30z. This is 65 minus 30z. This is 65 plus minus minus plus 0. Write OK if you have understood and copy it. OK and copy it. लिखो. OK and copy it. Wonderful. Wonderful. Asta, I don't know how much you have understood this, but you can listen to the recording, then you will be able to understand better. Let's do one more question. Different kind. That part is over. Okay. Please start, giving you 1 minute time. Find the complex number z for which mod z is equals to this. Now questions of this kind is very famous, in which they will ask you to find the complex number and they will give you some relation. I will do this question, then I'll give you one more question to practice. Still given you 1 minute to think and try this one. Okay, your time is up. Let us see. People, find the complex number z for which this one satisfies. There is other way of asking this question. They can also write down, solve for z. Z का value निकालो such that this condition, ऐसा कुछ. This is the other way of asking the question. Okay, so allow me to solve this. You know, this is the other way of asking the same question. Now, questions of this kind, you can assume that z to be a number. Generally, it looks like a plus ib, a complex number.
Please recall that what is the meaning of mod z. Mod z means square root of that a square plus b square. So put this z in this equation. So mod of z will be square root of a square plus b square is equal to alone z. z अकेला अकेला कैसा दिखता है जी, a plus ib. मॉड लगा हुआ था इसी कारण स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड है ये, मॉड्यूलस जिसको बोलते हैं, प्लस 1 प्लस 2i. People, real parts and real parts are friends. I mean, real people will be friends, imaginary people will be friends. So always, merge them. रियल वाले को रियल के साथ बिठा दो और इमेजिनरी का आई निकाल करके इमेजिनरी को अलग बिठा दो. इसका वैल्यू हो जाएगा a square plus b square. This is a very general approach. All the questions you should be doing this kind. Never leave the real imaginary separate. जितने भी imaginary portions है उन सबको एक साथ ऐड कर दो. That's how you actually add complex numbers. The real parts get added and the imaginary parts also get added with an I outside. Now, in order to proceed, I have to square both sides. Because जितने जगह पे ये square root रहेगा ना, ये कभी भी आपका काम आगे बढ़ने नहीं देगा. So always try to get rid of that square root. So how do I get rid of that square root? Squaring both sides. Next लिखो, squaring both sides. सर आप ये सब क्यों बताते हो सर कि गेट रिड ऑफ स्क्वायर रूट, आप आगे बना दो ना. मैं बुक नहीं हूं जी, मैं तो आपको समझाना है, आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है. ठीक है, तो ऐसे सोचना है ताकि हर स्टेप में आपको पता रहे कि मुझे भाई अगले स्टेप में करना क्या है, अटकना नहीं है बीच में. नेक्स्ट, स्क्वायरिंग बोथ साइड. आई थिंक लेफ्ट हैंड साइड विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. राइट हैंड साइड का अगर आप स्क्वायर करोगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2ab. So please check if I am writing correct. A plus 1 का स्क्वायर प्लस b plus 2 का स्क्वायर, मेरे माइनस होगा ना जी, क्योंकि i स्क्वायर भी तो है. i स्क्वायर माइनस 1, सो b plus 2 का स्क्वायर एंड बच गया मेरा 2 टाइम्स ऑफ i a plus 1 into b plus 2. अग्री. Now don't just copy कि सर लिखेंगे तब मैं कॉपी करूंगा, तो कॉपी कैट ही बन जाओगे, है ना. Now simplify. So this will become this. मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग भी करो एंड इसको एज इट इज रहने दो. इसको as it is रहने दो. There was actually no need to simplify because you understand कि लेफ्ट हैंड साइड में i वाला पोर्शन नहीं है. इसका मतलब राइट हैंड साइड का जो i वाला पोर्शन है ये पूरा जीरो है. Therefore 2 times of a plus 1 b plus 2 is a 0. It implies either this one is 0 or this one is 0. So a plus 1 equal to 0 or b plus 2 equal to 0. So b will be minus 2 or a will be minus 1. Right, okay, if you have understood. Is that okay? देख लेना जी. ये 2 2
ठीक है. So what is that complex number? B is how much? -2. A is how much? Is it -1? Just let me just cross check. A plus IB plus 1 square A plus ठीक है. अच्छा एक चीज और देख लो जी. A is equal to -1 and B is equals to -2. और अगर रियल पार्ट को इक्वेट करोगे so this part will be equal to this part, right? तो a square वाला पोर्शन तो कट जाएगा. Find out how much are you getting A from here. मतलब कि A square plus B square will be equal to this particular part. B is -2. If you put here, I don't think that's a problem. So the number will be -1. A plus IB है ना number. So it will be -1 plus -2i. ठीक है. This is the complex number which satisfies. Let's take up one question for you to practice. इसको बनाओ. Solve this. Go ahead, giving you 2 minutes. Okay. All right, your time is up. Maybe you can do the rest with me. Acha, people, just get back to this question. Observe one thing, that over here, इस क्वेश्चन में मुझे कुछ चीजें मैं अभी देख रहा था कि जो मैंने ये चीज किया है, I think it was not required to do this calculation part. एक बार इसको करेक्ट करना जरा. इस पोर्शन को you can avoid. I mean, keep this much. इतना तक रखो. Squaring both side is not required here itself. मैं बताऊंगा क्यों. We can eat away steps. ये वाला ना जो भी मैंने लिखा है इसको अभी आप इरेज कर दो तो जरा. I am deleting this slide. इस यहां से इरेज करो. स्क्वायरिंग मत करो, क्योंकि स्क्वायरिंग के बिना ही आई थिंक काम हो जाना चाहिए. जस्ट अ मोमेंट. आई जस्ट रियलाइज्ड दिस थिंग कि यहीं पे तो यार रियल और इमेजिनरी बट सकता है ना. क्यों महिमा? जैसे कि ये वाला रियल पोर्शन है और ये वाला तो पूरा रियल ही है, और ये वाला इमेजिनरी पोर्शन है और इधर इमेजिनरी पोर्शन नहीं है. दैट मीन्स एक चीज तो डेफिनेट हो गया कि b+2
जो है 0 है, दैट मीन्स आई विल गेट b इक्वल टू -2। एक और चीज क्या आएगा कि दिस पोर्शन विल बी इक्वल टू दिस पोर्शन। आप देखना, पिछले बार जब मैं सॉल्व कर रहा था मैंने बोला था कि रियल पार्ट को भी एक बार चेक कर लो, उसमें चेक करते हैं ना तो ए शायद सेटिस्फाई नहीं करता, तो एक और लिख लो कि √a² + b² will actually be equal to a + 1, right? एंड ऑलरेडी b का वैल्यू -2 आ चुका है, पुट b इक्वल टू -2 हियर। देखो ये सिंप्लीफाई होके और आसान हो जाएगा, +4 a + 1। अब स्क्वायर कर लो, नाउ स्क्वायर इट, a² + 4 इज इक्वल्स टू a² + 1 + 2a। a² कट जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पर आएगा -3/2 एंड b का वैल्यू है -12। Pardon me for that, please correct that one. Your z is a plus ib, a का वैल्यू -3/2 लिख लो and ib is 2i. This is the z. a गलत निकल गया था जी वहां पे, उसको ठीक कर लेना। चैट बॉक्स में लिखो करेक्टेड। एवरीबडी राइट इन द चैट बॉक्स करेक्टेड, वो जो मैंने काट दिया था। कॉपी कर लिया पीछे वाला। So there was no need to square it. This thing will try to use over here and ये चीज क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, so इसमें लिखो लेट z इज इक्वल्स टू a + ib। मॉड z का मतलब क्या, स्क्वायर ऑफ a² + b²। और ये जो z है इधर राइट हैंड साइड तरफ ले जाओ तो -z + 2 + i हो जाएगा, और z का वैल्यू लिख लो a + ib ब्रैकेट में, और ब्रैकेट जब खुलेगा तो क्या हो जाएगा, a - ib + 2 + i, राइट। सो यू विल बी राइटिंग -a, रियल वाला पार्ट को अलग करो, -a + 2, और यहाँ i कॉमन, ये हो जाएगा 1 - b। वेरी सिंपल। यू कैन सी दैट हियर ये सिर्फ रियल है, तो इमेजिनरी पार्ट 0, मतलब 1 - b का वैल्यू 0। इट इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट। सो लिखो equating the imaginary part, now equating the real part, √a² + b², b² का तो वैल्यू 1 है, मतलब 1 - a + 2। नाउ स्क्वायर बोथ साइड, ये हो जाएगा a² + 1 इज इक्वल्स टू a² + 4 -4a। a² कट गया, so you'll get a as 3/4, getting, and b as 1. So your z is 3/4 plus 1i. That's the answer. Understood? Right, got it. If you have copied, understood this particular question. Yes. You know why I ask you to write every time, sometimes got it, sometimes corrected, because when I see your chat box, कभी कभी लगता है ये पहले वाला रिप्लाई है, so I try to make your answer different every time. So we have covered your, if you talk about your ML Agarwal, so we have, no, if you talk about your RS Agarwal, we have covered exercise, I think that's 15, 15A and 15B. We can take a few questions which are little different from your ML Agarwal in this particular topic itself. Let me just check on it.
Write down one question. This is from your ML Agarwal. Prove that if z minus pi y divided by z plus pi y का mod equal to 1, then z is real. A very easy question. Make it fast. 1 minute. Okay, your time is up. Let us see the solution. Let us understand. People, you don't have to prove that this is equal to 1. It is given. So this part is given. Using this result, you have to prove that z is purely real. For this, there is one thing you should understand. You know what? Suppose I write z1 is one complex number. If I divide it by z2, अगर मैं दोनों का मॉड लूं, then I will realize अगर मैं अलग अलग मॉड लेकर के डिवाइड करता तो ये दोनों बराबर होता. So it is a property. लिखो कि since मॉड z1 by z2 ये मॉड बट जाता है, ये जैसे कि ये वाला जो मॉड है ना, ये ऊपर नीचे बट जाता है. This also holds true for product, कि जैसे प्रोडक्ट ऑफ z1 इंटू z2 है, मॉड बाहर में लगा हुआ है, तो ये मॉड बहुत ही सीधा साधा है, वो दोनों में बट जाएगा. मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद मॉड लगाओ, या तो मॉड निकाल लो दोनों का, देन मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है. और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले डिवाइड कर लो, उसके बाद मॉड निकालो, या तो अलग अलग मॉड निकाल करके डिवाइड करो. द रिजल्ट्स आर सेम. I will take a separate class on properties which are less important and the proofs of them. I mean, very rarely you can expect a question in which they will ask you to prove a particular property. However, some basic things you should know. Like in this case, this question can be solved if you understand the modulus property. Hold on a moment. Just a moment, okay? Keep trying. I'll connect my laptop to the charge. All right. So I think now we can do this particular question. I can erase this one. I'm sure you have copied these two properties. So as and when required, I will be discussing the properties, but I will take one separate class on all the properties. So you can see that this is nothing but mod z minus phi y
divided by mod z plus 5y. That's equal to 1. Definitely this one can go this side क्योंकि ये positive quantity है, equal to a sign है, is equals to z plus 5y. Let that z be some number a plus ib, some complex number. So write down a plus ib minus 5y का mod a plus ib plus 5y का mod. The complex number here is I common निकल जाएगा ना जी, ib minus 5, यहाँ पर भी I common निकल जाएगा, so this will be ib plus 5. इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b माइनस 5 का स्क्वायर, और इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b प्लस 5 का होल स्क्वायर. नाउ यू कैन स्क्वायर बोथ साइड, you can square both side, then what will you get, a square plus b minus 5 का square is equals to a square plus b plus 5 का square. You can see that a square will get cancelled. You will have b minus 5 का square is equals to b plus 5 का square. This is possible only when b is 0. या तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में ला करके इक्वल टू 0 कर लो, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा लो, a प्लस बी a माइनस बी. सो a प्लस बी करोगे तो आई थिंक 2b आएगा, मल्टीप्लाइड बाय दिस, माइनस दिस करोगे तो आई थिंक माइनस 10 आएगा. दिस इक्वल टू 0, दैट इज b इज इक्वल टू 0. देयरफॉर योर z इज a प्लस ib. सिंस b 0 है, देयरफॉर z is real number. Right? Okay, if you have understood, copied it well. We will take up the next topic now. Okay, I had already told you guys that you should begin doing homework. You know, you will have enough time. Oh, I'm not able to add pages. We'll have the class next Monday or Tuesday only. So by that time, kindly finish all your homework. Okay. Now, we will relax. You will relax for 1 minute. And in this 1 minute, turn your pages, check if there is anything you want to ask, any doubt or any question you have solved and you faced any trouble, you can ask the question. We just have around 10 minutes left. So I think I can address some of your doubts. Rather than starting with a new topic, because if I start the new topic, the argument and stuff like that, I'll not have enough time to solve the questions. So in this 1 minute, check out your notes and ask if you have any doubts. Somebody sharing something. Asta, is this your doubt? No, that's by mistake. Hope you are looking for your doubts.
If you don't have any doubts, you can write in the chat box, no doubt. It's clear up to now? Okay, so please write no doubts, everyone. Okay, so I'm giving you one question, try that, because there's no point in starting with the new topic now. Practice karo, likho. If z is equals to x plus iy and mod of z minus 1 minus I of mod plus 4 divided by 3 times of mod of z minus 1 minus I minus 2 is equals to 1, then prove that x square plus y square minus 2x minus 2y is equals to 7. Take a minute time, think. All right. Likho done, not done. Likho not done if you have not finished. Everybody please answer, then only I'll start. Okay, so many of you might be thinking, sir, you are giving very less time, 1 minute only. Okay, so this obviously in the class I cannot give you enough time to solve. You can take these as examples and then practice the questions at home. Now, Astha, I hope you will agree that ये जो mod of z है, जैसे कि याद है, z मान लो 3 plus 4i है. Then what is this mod of 3 plus 4i? Then your answer used to come as square root of 25 and the value was 5. So this thing is always a positive quantity, I have already told you. Or it is some value, it is a real number. So mod of z is always a real number. So in questions of this kind, I think if I observe that this particular portion is mod of something, and here also it is mod of something, तो इसको मैं P नाम दे दूंगा कि let mod z minus 1 minus I, ये कोई रियल नंबर है, इसका नाम है चलो P. तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, P plus 4 divided by 3P minus 2 that's equal to 1. So what will it be? ये वाला जो पोर्शन उधर चला जाएगा, I'll get P plus 4 is equals to 3P minus 2. As a result, I'll get my P as 6 by 2, that is 3. Agree? है ना? चलो, अगर P6, P3 है, okay, this I can erase. If P is equals to 3, and then what is this P? Sir, why did you take P? There was no need to take P. Just that I don't have to write, so big thing again and again. I have saved my time. So Z minus I, क्या है जी वाला? P का वैल्यू क्या है? Z minus 1 minus I, एक ही बात है. Z minus 1 minus I. So write down Z minus 1 minus I is equals to 3.
Now you can also let that it is already given as z is equals to x plus iy. So there is no need to let that. So write down x plus iy minus 1 minus I equal to 3. So real part को अलग, imaginary part को अलग. So x minus 1 real part plus I बाहर y minus 1 imaginary part का magnitude 3. किसी भी अच्छा महिमा, I hope you agree, mod z is equals to a. अगर if mod z अगर a है तो mod z का स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर. समझ रहे हो? यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा. इसका स्क्वायर करोगे तो इट विल बी सिंपली x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 9. आई थिंक इज डन. इसको सॉल्व करो. एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0. सॉल्व करो एंड चेक करो प्रूव हो रहा है कि नहीं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस, हाँ हो गया. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y 2 और इधर माइनस 9 प्लस माइनस 7, दस प्रूव. मतलब उधर चला जाएगा. राइट हैंड साइड में 7 चाहिए इन लोगों को. हो गया ना जी. ये 2 उधर चला जाएगा. सो दिस विल बिकम 7. इस 1 को हटा दो. हेंस प्रूव्ड. लिखो हेंस प्रूव्ड. लिखो कॉपीड एवरीबॉडी. That's nice. Chal. People, allow me to, share the screen and show you the book once. Starting with, I don't have the soft copy of ML Agarwal, okay? I think you guys have the ML Agarwal. And those who have NCRT and RS Agarwal, I can show you NCRT. Now, can you guys see the NCRT? Right? Yes. Yes, that's good. Class is over for the day, but I would like to show you few things. Starting with chapter. Now, I'm running through the pages and I'll show you what are the things we have covered so far and does it really cover everything that is there in NCRT. NCRT is said to be the Bible for any board, be it ISC or CBSE. So it is very important that we keep a track of the topics from the NCRT because this is considered to be the basic knowledge level required. When it comes to ISC, obviously the difficulty level of the questions will be a little higher given the questions in your ML Agarwal and all, but the fundamentals are derived from this topic only. Now you can see the introduction part is there. What exactly is a complex number? Then comes how do you compare real parts and the imaginary parts? What is the algebra of complex numbers? People, आपके हर बुक में दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लेना. एक आध प्रूफ हम लोग किसी दिन करेंगे which are very important. जैसे कि एडिशन ऐड करना है तो क्या होगा? रियल पार्ट को ऐड करते हैं हम लोग और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है. z1 plus z2 will be equal to z2 plus z1. If z1 and z2 are complex, then z1 plus z2 is also complex. Commutative law hold करता है. z1 plus z2 will be z2 plus z1. Obvious सा बात है. Come on. अगर मैं लिखता हूँ 2 plus 3i, तो वो 3 plus 2i के 2 plus 3i is equals to 3i plus 2. So even if two complex numbers are added, the position does not matter. Bracket also does not matter. That is called associative property.
भाई किसी नंबर में अगर आप 0 ऐड करोगे तो नंबर को फर्क नहीं पड़ेगा, ये कौन सी बड़ी बात है भाई। एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं उसको। किसी नंबर में अगर आप 0 ऐड करोगे तो वो नंबर को फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी फर्क नहीं पड़ता है। एडिटिव इनवर्स कह रहा है कि अगर आप नंबर में उसके z माइनस को ऐड करोगे तो 0 होगा, कौन सी बड़ी बात है जी। अगर 2 प्लस माइनस 2 करेंगे तो 0 ही होगा। दिस ऑल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नो बिग डील। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कुछ नहीं, रियल पार्ट को रियल सब्ट्रैक्ट करेगा और इमेजिनरी को इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट करेगा, कौन सी बड़ी बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वी विल ट्रीट द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट एज ए बी सी एंड डी। तो हम लोग करते थे ना, a into c, 3 into 2, not a big deal. So how do you multiply? So I hope everybody understands how do we multiply. मल्टीप्लीकेशन में भी सारे लॉज होल्ड करता है क्लोजर। अगर z1 कॉम्प्लेक्स है, z2 कॉम्प्लेक्स है, तो z1 z2 भी कॉम्प्लेक्स होगा। मैंने कहा कौन सी बड़ी बात है। कम्यूटेटिव ऑल्सो, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, वही बात इसमें भी होल्ड करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ब्रैकेट इधर उधर हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुस्सा नहीं आता है। z1 इंटू z2 ब्रैकेट अगर चेंज करोगे तो इट इज कॉल्ड एसोसिएटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये क्या है भाई, कुछ नहीं, z इंटू जेड इनवर्स, z इंटू 1/z 1 होता है, 2 इंटू 1/2 1 ही होता है। सर आप क्या नया बता रहे हो, कुछ नया नहीं है। तो ये सब चीजें से घबराना नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव भी होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड करता है मतलब z a इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी होता था ना, ये चीज यहाँ भी होल्ड करेगा, नो बिग डील। z1/z2 कैसे निकालते हैं, तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस बाय दिस करेंगे। मैंने आपको इस चीज को ऐसे बताया था कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, आई डू नॉट लाइक आई इन द डिनोमिनेटर, नेवर कीप आई इन द डिनोमिनेटर। सो इन्होंने भी वही किया, आई नीचे से हटा दिया, आई को ऊपर कर दिया। So they have expressed that z1/z2 as a plus ib. Power of I पे we have discussed plethora of examples. We can skip that. 4k, power 4 का multiple रहेगा तो value 1 होगा and stuffs like that. Square root of a negative real number I का मतलब क्या होता है, अभी वो समझाना शुरू कर रहे हैं। चलो, आइडेंटिटीज में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कशिफा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो भाई z1 z2 में भी वही होगा। सर कुछ नया नहीं है तो क्यों ये लोग पेजेस भर रहे हैं, भाई वो बस ये बताना चाह रहे हैं कि डोंट ट्रीट कॉम्प्लेक्स नंबर एज रियली कॉम्प्लेक्स, दे आर वेरी सिंपल एज यू हैव स्टडीड इन योर स्कूल्स। a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर के लिए भी वही फॉर्मूला होगा। मैंने कहा ठीक। Then comes express the following numbers in the form of a plus ib, मतलब क्या कि कहीं भी आप ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है अच्छा नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करके एक नंबर ऐसा एक्सप्रेस करो, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो क्यूब कर दिया। सर क्यूब के लिए कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी होल क्यूब के वही फॉर्मूला लगेगा। सो ऑल द अलजेब्रिक फॉर्मूला आर एक्चुअली एप्लीकेबल टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑल्सो। Then I told you guys about the modulus and conjugate. Modulus क्या होता है, बस स्क्वायर रूट होता है दिस रियल पार्ट और इमेजिनरी का स्क्वायर्स। ये वाला पार्ट मैंने कहीं ना कहीं बताया था, मॉड z, z इंटू जेड बार इज मॉड z का स्क्वायर। ठीक है, किसी कॉन्जुगेट से अगर z को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो मॉडुलस होता है उसका स्क्वायर के बराबर होगा। अभी देखो कुछ देर पहले मैंने आपको ये चीज बताया, आई थिंक यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये वाला बताया ना जी महिमा, मॉड z1 इंटू z2 का मॉड z1, ये वाला भी पता है, बाय हो जाता है मॉडुलस और डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। अगर पूरे में मॉड एक्चुअली ये जो ऊपर में है पावर बार जो लगा हुआ है ये कॉन्जुगेट है, और ऐसे करके जो वर्टिकल लाइंस है दे आर द मॉडुलस। तो कॉन्जुगेट का भी प्रॉपर्टी जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ही होता है। ठीक है, एक आध जो आपको लगेगा परेशान करेगा, ये ऊपर में रहता है तो ये भी बढ़ जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। z इनवर्स, z इनवर्स का फॉर्मूला आस्था यू हैव रिटन इट रॉन्ग, आपने अपने नोट में लिखा था z इनवर्स इज z बाय मॉड z का स्क्वायर।
ये z नहीं होगा, z बार होगा. करेक्ट कर लो. No need to remember the formula. 1 by z करो and then try to remove this I from the denominator by multiplying the numerator and denominator by the conjugate of it. Conjugate of this. And then comes exercise 5.1. Exercise 5.2 is all about Argand plane. In the next class we will be talking about Argand plane and polar representation. बहुत छोटा टॉपिक है जी, एकदम खत्म. ये एक क्लास लगेगा, एनसीईआरटी इज ओवर, देन कम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सो ऑन. ठीक है. I think I have covered all these aspects as lucid as it could have been, and that's it for today. Have a good day and thank you. Finish your homeworks and share the images.